welcome to our activity, A Circle of Growth, Session 3. As we promised, we are going to bring a number of successful people on this platform to discuss the importance of failure in their journey of success. To discuss more about embracing the failures and appreciating the challenges to get succeeded, we have a very special guest today with us, Mrs. Ganga Sharma. Her list of accomplishments and achievements is too long. I cannot address all those accomplishments and achievements in one session. But few of them are: she is a strong and a successful woman who has overpowered all the obstacles of her life with the power of strong determination and hard work. She is very genuine, very humble, and down to earth human. And I'm very pleased and honored to say that today she is here with us to discuss her untold story of success and failure. So let's continue and talk to her. Hello Gangadi, thank you so much for being with us. I'm truly very pleased to see you here. थैंक यू मुक्ति, तुम्हें इतने दिनों बाद मिलकर और तुमसे इंटरैक्ट कर बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी that you have chosen me as today's guest. And before proceeding further with my journey, first of all I want to congratulate you because तुमने ये जो काउंसलिंग सर्विसेज शुरू की हैं और इसमें अपना सारा एक्सपीरियंस इनकॉर्पोरेट किया है, जो भी तुमने गेन किया है बोथ इन इंडिया एंड यूएसए, और इसको तुम यूज कर रही हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन. दैट इज वेरी वेरी कमेंडेबल. And you know that in today's time, higher education of the women and the working women, these things are very common. But जब हम लोग यंग थे इस तरह से नहीं था. ये हायर एजुकेशन अचीव करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क था. So we all were very ordinary girls, which became extraordinary by achieving something as basic and necessary, that is education. And I'm not here as myself as Ganga Sharma, but I am here as a representative of all the ladies who have struggled in their life and achieved something. Believe me, Ganga, the pleasure is mine to have you here. And now moving towards our very first question. I have always seen a determined and a focused individual in you who is passionate about career and education. And it is believed these kind of people face very less challenges, or they get success easily as they are already focused, as they already know what to do, where to go, and like success comes easily to those individuals. Is that true? I truly want to know what type of challenges did you face in your journey of success, and how hard it was for you to overpower those challenges. Yeah, Mukti, now talking about the challenges what I face. सबसे बड़ा चैलेंज तो था कि जब मैं बहुत ही छोटी थी, when I was 3.5 years old, we lost our father, and me and my 2 sisters were brought up by my mother single-handedly. But मैं ये कहना चाहूंगी कि ये हमारे लिए तो चैलेंजिंग था ही, लेकिन हमसे भी ज्यादा चैलेंजिंग हमारी मदर के लिए था, जो कि आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो कि बहुत वेल एजुकेटेड नहीं थी, एंड उन्होंने जॉब भी मेरे फादर की डेथ के बाद ही ज्वाइन की थी. बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर द डॉटर्स ऑफ अ वेरी स्ट्रांग वुमेन. So this is the role a very strong woman can play. She not only is responsible for her life, but she is responsible for her children's life also. So अगर एक वुमेन स्ट्रांग होती है तो वो पूरे परिवार को संभाल सकती है, मैं ये कहना चाहूंगी. और रिगार्डिंग द रेस्ट ऑफ द चैलेंजेस जो मैंने फेस किए वो लगभग सेम ही है जो एक छोटे शहरों में पले बड़े लोगों के लिए चैलेंज था. जैसे कि हमारे यहाँ पर उस समय कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, एंड वी वर नॉट फाइनेंशियली दैट गुड दैट वी कैन गो टू चंडीगढ़ एंड स्टडी देयर.
and we cannot afford the hostel fees and all. So हमें रोज अप डाउन करके सोलन जाकर पढ़ना होता था. तो ये भी काफी चैलेंजिंग था क्योंकि बस सर्विसेज उस समय इतनी नहीं थी, एंड फाइनेंशियली भी हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम लोग क्या कहते प्राइवेट बस का किराया अफोर्ड कर पाए या ऑटोज अफोर्ड कर पाए. सो ये सब जो चैलेंजेस थे जो आज की डेट में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ये उस समय बहुत ही बड़े थे.